गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? केम छो? तो आज का हम लोग ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आप सभी का इस वेबिनार में मोस्ट वेलकम है। आज का ये हमारा इंडियन ड्रोन वेबिनार सीरीज में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आई होप आप सबको इस वेबिनार में जो भी कुछ होगा आप लोगों को सबको समझ आएगा एंड आप लोग सब कुछ सीख के जाएंगे। ये ड्रोन लैब द्वारा इनिशिएट किया गया है एंड हमारा मोटिव है कि हम आने वाली जनरेशन, यूथ को एंड एंटरप्रेन्योर्स को कुछ नॉलेज देकर जाए। ये हमारे यूनिवर्सिटी पार्टनर्स द्वारा ग्लोबल मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SVIT, NFSU, इंडस यूनिवर्सिटी एंड GTU। तो आप लोगों को ये वेबिनार कैसा लगे जरूर बताना। और मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ चिंतन सर को, जो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे मेंटर के लिए। You muted Chintan bhai. सर माइक ऑफ है। Sorry. Good morning, all the students, and warm welcome to our today's mentor, Dr. Dhruvesh Patel. Sir, good morning. Very good morning. I am Chintan Parmar. I am working as a drone instructor in Dronelab Academy. So today we are joining for the water resources planning and management using drone, RSGIS and modeling techniques. So today it's our first of all, I am introduce our today's mentor, Dr. Dhruvesh Patel, who working as a associate professor and head of department in civil engineering in PDPU. So welcome, sir. Sir, I'm hand over to this session to you. Please, sure, sir. Thank you so much, and I'm sure that it is too excited for the participants. Okay, so I'm going to share my screen, Sure. And we will start this session. The entire screen. Yes, I'm sure it is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, now I do full screen. So great, Chintan bhai and Ruhi. It's my pleasure to deliver the lecture in your session, and this is really a very great. I say that the initiative you guys you are taking in a wonderful time. In fact, we all are experienced recently the Biparjoy cyclone, and we all have the questions that how we quantify or estimate the vulnerability and the losses. So I will cover small of those part also, but here more emphasize more or less the part of water resources, planning and management using the drone, remote sensing and modeling techniques. Before proceed this lecture, they already introduced me, but I would like to introduce furthermore, like I have been working in PDU since 2016. And I completed a bachelor, master, and a PhD degree in civil engineering and specialization with water resources, engineering and management. Civil engineering department PDU, which was established in 2010. And since there we have two classes, we have more than 120 strength along with the master program. So any who are looking for master, we are welcome to you. Okay, so moving towards the more emphasis in the part of drone, although I have tried cover the part of modeling also. So I see, and the Tejas Chintan has enlightened me that the participants are students, drone entrepreneurs, and the industry people, and the researchers. So I'm sure that after the end of this session, each of you will cultivate very important application of drone techniques in water resources management. So water resources planning and management is very crucial part nowadays. And you might wonder, friends, that we have more than 5,400 dams in India. And each of the dams required the efficient management. We had the very catastrophic experience in 2006 when we released the water from the Ukai Dam, and we are all victim that the Surat city, which was under inundation, and we had the high disaster. At the time when the technology are not flourished properly, or
maintained properly. So we not efficiently, we say that they analyze the floods, but now looking to the advanced techniques like drone, I say that it are very promising techniques which is help to produce the high resolution surface. And this high resolution surface is now the key role here, which I am going to present, that how this drone will help you to produce the high resolution land surface, and how we estimate the water or water depth or water velocity, which are very important or which play very key role for finding out the vulnerability and analysis. So these are the picture which you see in this, we say that the introduction slides is like releasing the water, and the mid part is like development of the high resolution DEM. This is the tricky part we are going to learn today, that how the drone will use. And then the another important part is modeling, especially the students who are like working more in the part of research. I'm sure that this modeling part will help them. And finally, preparation of the different maps where we will use remote sensing and GIS techniques. And these maps are helpful for the decision maker. So recent event, we know that we have heard the words like NDRF. We are helping to evacuating the people from low-lying areas. So NDRF entirely work on based on the very important information extracted in form of the maps. Through maps only they will aware that where and which area that it are low inundations. So the entire work, considering the first case study, I would say that if you would like to extract more in this case, I suggest, I recommend you can refer this journal paper, and where you will get all the detail. Although you can ask me the question in between, feel free to ask, because I don't feel that it is the expert lecture, but just I say that these are like the interactions between the intellectual participants, and we will try to explore more applications in future. So I begin with, I'm sure that you get the photographs, participants, and you understand that what exactly the mistake or the problem it has, right? So it's a watermelon which is held by some person which are traveling by the train. But you understand. So similar case, we have so many problems surrounding us. And the problems are solved. But when you start solving the problems anywhere, usually in technical field, we have seen that on the side we had so many disputes. And the dispute starts from like. So I want the answer from the participants, what the figure it is. Anyone? Because these are the very essential process which I am delivering here, and later like we'll see the part of the drone and the flood, and then how it will help you. So what is the figure, guys? Anyone? 6 or 9? So confused. Okay, so both answer I will say the 6 is also right, the 9 is also right. But when you start like learning the part, there has been, we say the conflict will be generated. So resolution of conflict, you have to provide the appropriate options. So again, I would like to ask that what are the options are correct here? So you say all of the options are correct, right? So in the way that when we will implement the techniques, we have to see that which of the techniques are adjoiningly applicable for solving the problem. And finally, we say that we get like the marvelous in our engineering field. So I come to the part, I say flood and flood assessment. I move quickly because we all interest to learn the part of how drone is used, especially in the flood model. So begin with flood. Flood is all the part when it is inundated the land area, especially the dry land area. And land is very key and important role to simulate or to, we say that the flow the water on the surface. So velocity, inundation, depth are very important and major part in flood assessment. Each of the flood having the 3 stage, pre-flood, during flood, and the post-flood. Similar case, few days before we have experienced that forecasting of the cyclone, during the cyclone. And now the part comes to the assessment of the cyclone. So similar case in the flood, pre, during, and the post-flood.
So these case studies more or less which are covered the part of the post flood. So where we do the assessment of the flood. So flood assessment in part of the depth of the water, the velocity of the water surface elevation, and these all are very important and essential part for the hydrologist, or we say the decision makers, or either we say that entrepreneur, or either we say that the consultant, where they can providing the very important informations to the decision makers, or maybe the individual industries, where like how it will be affected by the floods and how they will residing or mitigating the flood against the flood flurries. So there are two types of the flood which are estimated mostly in civil engineering or water resources field: natural flood and man-made floods. So we more interested in the part of the man-made floods where the water are released from the dams. As I said, in India we had 5,300 more than 300 dams. Each of dams lead mostly the flood at downstream side. So you understand what is the scale of the work where exactly these techniques will be implemented. Partly I have seen few of the cases only, but in future also, like these techniques are widely applicable for the consultant, or we say that the researchers to entrepreneur to work in this area. Consult to Gujarat, we say the major 18 dams, but however major to minor 630 dams which are covered. For doing the flood analysis for flood catastrophe, CWC has published two guidelines. And in these guidelines, they have demarcated very important part of development of the high resolution DM. So we go through very quick this part. But before it, let me see that why the flood is important in India. So considering last 1 decade, flood are the major events, and you can signify that from this figure, statistical figure, that out of all the disaster, flood are the top of it. Out of 359 events has been reported, and 184 events we have observed from last 1 decade. This is from the flood only. 12% of our geological area are affected by floods. So the entire 12% geographical area, we say that where the assessment is required. And this assessment, I'm very sure that prominently we can do it by using the drone technique. So therefore, flood prevention, mitigation, and management are more important. These are few of the events. I go very quickly that in Assam, in Gujarat, you experienced that the Banaskantha flood. I will take the case study now in this lecture, and I will show you that how we prepared the high resolution DM for one small city like in Banaskantha, or may anyone are from the Banaskantha, they are aware that Dhanera city in the Banaskantha district, which was affected by the floods. So we have taken the applications from the drone techniques, and where we have produced the high resolution DMs. These are all different events. I move very quickly, but my emphasis in that what is the scale of the work actually, where the we say the high resolution images will helpful to quantify the quantity of the floods. So these are the estimated loss we have experienced in India, and where exactly the techniques are more used. So I begin with the part of surveying actually, because drone is not the new techniques. Drone is already been invented since past. If we covered it history, then 18th century, first time we say in the globe, across the world, the China has invented, and they have attached the camera with the kites. And then they have captured the informations from the town, and then later this information they use for better town planning. Later stage we have used the pigeons like those, and where we again attach the camera, the pigeon are fly over the area, and then it has take the different images, and then these images we use for like the different decision making systems. So gradually, from 1975, we say that we have first time launched the satellites, and you all aware that it is the part of remote sensing, where it not directly in contact with the object, and it start capturing the informations from the ground. So similar line, we say that drone is the family from remote sensing, and which are fly below the clouds. However, the satellites which are located in orbit, but however the drone which are
fly below the clouds, and then it has been captured the useful informations from the ground. Depends on your application and requirement, the information will be used for many applications. And here the entire lecture is concentrated in the part of that how we produce the high resolutions DEM, digital elevation model or digital surface model, by using the drone. Because as we know that when the water which are residing on Earth's surface, it is traveled by the Earth's surface itself. So the Earth surface will play very important role, and if you know very precise information of the Earth surface, and then only we say certainly we will quantify that the vulnerability and hazard, especially in flood management or water resources management. So begin it with surveying techniques, and I'm sure you all of you aware or might be who are from civil engineering, they can detect this instrument very well. I'm sure participants, I'm sure you recognize the first figure and the same time the second two. Yes, I'm more happy if you will give me the answer. We will put more forward to the interactive. Okay, fine. So if you're not, I will say that this is the total station. So I say 1 decade before, the total station is very popular tool which is used for linear, angular, and elevation measurements. So this is the elevation measurements, and usually we call in civil engineering it's part of contour, and contour which is representing the elevation part of the Earth surface. Gradually, the next stage, the another tool which are invented in surveying and mapping field, and though we call that global positioning system. So initially when it is invented, it is used to find the position of satellite in orbit, but simultaneously human beings are understand if you know that the position of satellite in orbit, then why not we can identify our own position by help of the satellite. So once we take the reverse application, then the scientist and the engineer and the community are understand that how we identify the different object on the Earth surface by using the GPS. So I say here we use GPS along with the drone, which help us to produce the high resolutions digital elevation model of this surface. So I begin with remote sensing and the important part of the UAV. Now how UAV will work, you all will aware the component of drone and UAV, which are consist with the camera, and we say wings and the rotors, and more important part is the camera. Camera will capture the informations from the ground. But understanding that how camera will capture the information and what is actual the resolution covered by the cameras, we have to understand exactly that how this concept begin. Even if we are not familiar to use our mobile, and as of now, we know that when we use mobile, we capture the photograph with the high resolutions. Like when you resolve your the photograph, you find out that each of the photograph covered by the different pixels. So we are here more interested in the part of the pixels, actually, that how we improve the resolution of the pixels. So these are the satellites we have launched, and I would like to explore more about the part of the resolutions now. And this resolution play a very important role for development of the high resolution terrains. And this high resolution terrain or DEM, we say that it is very, very important part of the flood assessment. And again, very important part of water resources management and the planning. So I'm sure you detect some of the objective, and I'm very sure you all are familiar with drone as well as the remote sensing technique. I will give you very small example of like you all using the Google Earth. In Google Earth, when you zoom, you can see the different part of the Earth surface which are covered by help of the different amenities we say. So these are some of like I say road, and I will say that the different houses. Now you say like earlier it has captured by help of the 80-meter resolutions, and now you exactly see that 80 meter. You cannot
very clearly to digitize the object from the 80-meter resolution. Suppose this kind of the images will be captured by the drone on the Earth's surface, then we are very sure that it cannot be used efficiently for the engineering applications. So the resolution should be improved, and these are all example of that. What is the importance of the resolutions in remote sensing and drone techniques? So these are the 30-meter resolutions. Now in 30-meter, we detect some of the objective, but however, we are not very much sure that what are exactly the objective object on the ground. So again, say that if drone can use and capture this kind of the informations, I say it is not more helpful. So who are beginning like their experiences or like utilizations of the drone, they have to first ask to the vendor or maybe that any suppliers that what is the resolutions of the images captured by the drone. So these are all the images, okay? These are 10 meter, 1 meter, and finally that submetric resolutions. But however, the submetric resolution images are captured by the satellite. But drone are very precise. Drone even if will capture the information up to the centimeter scale. So meter to centimeter. It is very precise informations. Even though if we have one small car which are parked in front of any house, if we resolve, even though we can detect its number or maybe that any of the remarkable point will be located on the car, you are very significantly identify that what are the object located on the car. So these are, we say that the application actually where the drop. I will begin further that like satellite techniques, 30-meter resolutions, DEMs, or 10-meter resolutions, 1 meter, and now we enter in the part of we are more curious about that how drone will help. So I will show you some of videos and where you see exactly that how high resolution DEMs are generated by using the drone. But before it, you should know that what are the different categories of drone. Usually the drone starts category from nano. So you see in the first figure, these are nano drone, okay? This nano drone usually used for surveillance purpose or like the photography, or we say that the videography purpose. You see in many marriages, like we use the nano or micro type of drones where it is used only for capturing the photographs. But however, these photographs are not useful to help us to derive the important informations of mapping. So mapping in terms of like length, width, area, and the elevations. So nano drone or micro drone usually not used for mapping purpose. So we'll use the high category, which starts from the small drone. So this second photographs where you see that this is the we say that the small drone. Phantom 4 Pro are very familiar in the part where early age which are entered in the Indian market. This is China product, however, now it's banned, but we consider like it is the part of the small drone. Now this small drone will play very tricky role, and now it has changed the entire, we say that surveying and the labeling field. Now every surveying and labeling nowadays, it has been possible or it has been acquired like by using the drone techniques. So it is very advancing. And next is to be medium drone and the large drone. So medium and large, mostly it is used for agriculture and we say that the defense applications. So I begin with, you will see one small video and where you have exactly seen that how drone works. It has begin with, they will initially decide the track of the drone, means where it will fly. The second stage, the drone will fly and capture the image from the ground in form of the photographs. Third stage, it will show that how these photographs are analyzed by help of the software techniques. And finally, at the end product, you will see that how they have created the high resolution DEM. So we have adopted actually the same methods in our study area and where we have developed the high resolution DEM for Dronelab city. So I will go quickly and we will see that one small video,
how drone is used. So this is, so first is the area of interest, and it is created by KML file. Now the path is created. Based on the path, the drone flies. Okay, so it's spoken at the end, generate the high resolution DEM, digital elevation model. So this is exactly the part where you see earlier, if we have to create this type of 3D surface, initially we use theodolite or leveling instrument. It takes lot of time to generate the earth surface in 3D. But however, by using the drone techniques, it is in fracture of, we say that minutes or in some time interval 1 to 2 hours, it will be covered the entire area. And later by using the softwares like Pix 4D and the other open source softwares will use for conversion of those capturing information into 3D. So we are more important in the part of flood management, where we require the high resolution DEMs. So this is the part where the high resolution DEMs are created by help of the drone technique. So I go to the first case study where we use the drone for generation of high resolution DEMs, and we have applied these techniques for flood assessment in Dhanera city, Rail River catchment in Banaskantha district. So you exactly see many question will be generated at this point. Sir, we have like remote sensing technique. Why should we require drone? But remote sensing, some point of view, it has some limitation, like it cannot be covered the part of centimeter accuracy. Now, centimeter accuracy are more important part in flood assessment. When we simulate the water on Earth's surface, it will pass through the different societies and gullies. And once it will pass through different societies, or like even if we can identify the water depth exactly at the location of the staircase or maybe the gates at your house, it is very precisely helpful to identify the water depth up to the centimeter accuracy. So this miracle has been happen only and only by once you have the high resolution DEMs. So you clearly signifies the difference, student, right? This is the 10 meter by 10 meter gridded DEM. However, this is the 3.6 centimeter high resolution DEM. So I will explore the basic very quickly. If you are aware, then it is well and good. If not, I will explore that how exactly this 3D model are developed. So all 3D models in the digital form nowadays, we say that it is the digital elevation model. Okay. So contours is one of the case, triangulation irregular network is one of the case, and third and more important part is the gridded DEMs. So this is the case of gridded DEM, and finally it has been produced by help of the drone. Now once you produce it, it's not directly applicable to estimate the floods. But however, we can estimate the flood, we say, by using the flood models. Okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये जितने भी कलरफुल आपको मैप्स दिख रहे हैं, all are, we say, it is DEMs actually. Okay, and this DEM we have produced by using the high resolution DEM, with help of the UAV. Okay, so moving to the flood and our objective, यहाँ पर objective है हमारा flood assessment. Flood assessment हम करेंगे hydrodynamic modeling से. Each of the hydrodynamic modeling required as the input of DEM. अगर आपके पास अच्छा DEM है तो आप अच्छे से flood hydrodynamic modeling में से
टोटल डिस्चार्ज, वेलोसिटी, वाटर सरफेस एलिवेशन आप डिराइव कर पाएंगे 1D मॉडलिंग में, और 2D मॉडलिंग में आप वाटर सरफेस एलिवेशन, वेलोसिटी, अराइवल टाइम आप क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है अच्छे से, तो these informations are very important for the decision maker. So begin with I go by help of the flood guideline. तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तो पूरे इंडिया के लिए बताया है कि जितने भी मेजर सिटीज है उस सिटीज में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्निक के द्वारा कंटूर मैपिंग प्रोड्यूस की जाए, और इससे भी आगे अगर हम जाए तो पूरे सिटीज के लिए 3D मॉडल को बनाया जाए। तो ये 3D मॉडल सारे यूज हो सकते हैं जब भी हम वाटर रिलीज करते हैं डैम में से। तो ज्यादातर डैम में से वाटर रिलीज होता है, तो डाउनस्ट्रीम में कोई सिटीज होते हैं वो ज्यादातर फ्लड से अफेक्ट होते हैं। तो उस सिटीज में कितने इनंडेशन होगा, कितने लेवल पे इनंडेशन होगा, उसलिए जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में, उस गाइडलाइन तहत हम हाई रिजोल्यूशन डीएम को ड्रोन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इन दिस केस स्टडी I said the Banaskantha which was affected by floods. So Gujarat, Rajasthan, this means Banaskantha and the Rajasthan, and in between the border, this is the Rail River catchment, and in the tail of the Rail River catchment, यहाँ पर Dhanera city situated है। ये Dhanera city 2017 में हाईली फ्लड से अफेक्टेड हुआ था। इस सिटी में फ्लड असेसमेंट के लिए हमने यहाँ पर ड्रोन को यूज किया है। तो ड्रोन फैंटम 4 प्रो we have flied for the entire city. It has been located like initially begin from the one end. We have divided the entire city in the 4 part, and we flied the drone at 130-meter height from the ground. So when it flied from the 130-meter height from the ground, it captured the informations from the earth surface in form of the pixels, and this pixel having the resolution is 3.6 centimeter. अब नाउ ये सम हैव क्वेश्चंस के ड्रोन को किस लेवल पे फ्लाई करना चाहिए, कहाँ पर फ्लाई करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस रिजोल्यूशंस का डीएम आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, उस बेस पे हम ज्यादातर ड्रोन की हाइट और फ्लाइट को डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेप्स है इनिशियली कोई भी ड्रोन को कोई भी एरिया में डिप्लॉय करने के लिए और वहां पर इंफॉर्मेशंस को कैप्चर करने के लिए। तो इनिशियली केएमएल फाइल चाहिए, केएमएल फाइल से ड्रोन को पता चलता है कि इस एरिया में हमें डेटा को कैप्चर करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, अगर उस एरिया में अगर हम डेटा को कैप्चर कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है, कि अगर आपको कैसे पता चले कि ये इस एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं, तो उस टाइम पे हम जीपीएस और डीजीपीएस को यूज करते हैं। यहाँ पर 7 डीजीपीएस पॉइंट्स लिए गए हैं, और जैसे लैंड सरफेस के ऊपर कोई ब्लैक और लाइक कोई स्पॉट्स बना दिया जाता है और वहां उसके सेंटर में एक पॉइंट लिया जाता है, उसी पॉइंट्स को इमेज के ऊपर फॉल करवाया जाता है कि जिससे हमें पता चले कि जो पॉइंट्स लैंड पे लिया गया है उसी लोकेशन पे है कि नहीं। सो दीज आर द प्रोसेस एक्चुअली दैट हाउ वी कैप्चर द इमेजेस। अब इमेजेस कैप्चर होने के बाद ड्रोन ऑटोमेटिकली उसको डीएम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम इन बिटवीन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि पिक्स 4D और ग्लोबल मैपर और मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर यूज एक्चुअली फॉर डूइंग द इमेज एनालिसिस। तो इमेज एनालिसिस में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेजेस में जैसे हमें पता है कि ड्रोन से जैसे ही इमेज कैप्चर होती है वो छोटे छोटे एरिया के लिए कवर्ड होती है। तो बड़े एरिया के लिए अगर हमें डीएम जनरेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इमेज को मोजेक कर लेते हैं। तो मोजेक करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। पिक्स 4D में वहां पर टूल्स अवेलेबल है जहां पर आप इनिशियली इट विल पुट दैट द मोजेक ऑफ द इमेज। तो मोजेक ऑफ द इमेज में अगर जाएंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितनी इमेजेस को आप सिलेक्ट करके मोजेक करना चाहते हैं। जितनी ज्यादा इमेजेस आप लेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपको इमेजेस मोजेकिंग में लगेगा। अगेन इट इज डिपेंड्स ऑन आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं। जैसे आपने सुना है कि भाई मेरे पास i9 है, i9 4 है, या फिर मेरे पास मे बी 16 GB रैम है। तो ये सारी मैटर्स इमेज प्रोसेसिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि इमेज कैसे उसको मोजेक किया जाए। द नेक्स्ट इज वंस इट विल बी मोजेक, now it is the time to convert the point clouds.
Now, point cloud is purely the information captured by the location of the drone. तो जब ड्रोन जो भी इमेज लोकेट करता है, कैप्चर करता है, उसी टाइम पे ड्रोन की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर हो जाती है कि उस किस लोकेशन पे, किस जगह पे वो फ्लाई कर रहा है। उस लोकेशन को डिटेक्ट करके सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि ये जो फोटोग्राफ ली गई है वो इस पोजीशन, इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से ली गई है। सो ऑटोमेटिकली जब सॉफ्टवेयर में हम डालते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो जहां पर भी जिस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से वो इमेज ली गई होती है उसी लोकेशन पे जाके फिट हो जाती है। फिर बाद में सॉफ्टवेयर उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये मेन सी लेवल से कितनी हाइट पे ये पॉइंट लोकेटेड है। जैसे ये पॉइंट लोकेट हो जाता है, इट विल बी कन्वर्टेड इन द पार्ट ऑफ point clouds, and the later point clouds are converted in part of, we say, 3D, or the other word we say that it is the DEMs. So these are, I say, the major role where the drone will play to generate the high resolution DEMs for flood assessment. Now I go quickly the part of the flood assessment, and I will touch very little part of the flood modeling, but we are more interested in the part that how water are simulated by using high resolution DEMs and the software techniques. So these are all the, we say, the flood assessment tools or the softwares. Out of it, HackRus, HackGeoRus, and RusMapper are decided by help of the CWC and Water Management Authority. Now, as I said, each of the model required as the input of high resolution DEM. So high resolution DEMs are make as the input in modeling. These are the case where you see the colorful part. This all colorful part is nothing, but it is the part of the high resolution DEMs. Now these DEMs, how it will help in water resources management. तो इस DEM से आप रिवर के क्रॉस सेक्शंस को डिराइव कर सकते हो। नंबर ऑफ रिवर क्रॉस सेक्शंस अगर आप डिराइव कर लो तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर आप वाटर को सिमुलेट कर रहे हो एक एंड से दूसरे एंड पे, तो रिवर में पानी कैसे बहेगा और कैसे उसका बिहेवियर होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्चार्ज होगी उसके। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब आप कोई कंस्ट्रक्शन लाइक कोई डैम को रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई छोटा वियर बना रहे हो, कोई चेक डैम बना रहा है रिवर के अक्रॉस, तो उसी टाइम अगर हमें रिवर क्रॉस सेक्शन मिल जाए तो उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकर दैट हाउ दे मैनेज द वाटर रिसोर्सेज। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल। वी हैव सिमुलेट द मॉडल एंड वी हैव एक्सट्रैक्टेड द रिवर सेक्शन। ये यहाँ पर जितनी भी ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो सारे रिवर क्रॉस सेक्शंस है, और ये रिवर क्रॉस सेक्शंस डिराइव होते हैं डीएम से। अगर आपके पास जितना हाई रिजोल्यूशन डीएम होगा इतना ही प्रिसाइजली आप इस क्रॉस सेक्शंस को डिराइव कर पाएंगे। अगर ये क्रॉस सेक्शन आपके पास प्रिसाइजली आ रहा है तो आप डिसाइड कर पा रहे हैं, जैसे अगर आपको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है रिवर अक्रॉस, तो आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि ब्रिज की डेप्थ, विड्थ, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसमें कितने पियर्स आएंगे, अगर पियर्स आएंगे तो कहाँ पर आएंगे। तो ये एक हम मान सकते हैं कि बेसिक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ली जा सकती है ड्रोन टेक्निक से। फिर इसी तरह से 2D में होता है, और 2D में फाइनली वंस वी सिमुलेट द मॉडल, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे पानी रिवर में फ्लो हो रहा है। ऐसे ही ऑटोमेटिकली ये फ्लो नहीं हो रहा है, इसके पीछे बैकएंड में हाई रिजोल्यूशन डीएम्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ सिमुलेशंस। These simulations done by using the hydrodynamics techniques. तो हमें पता है कि वाटर जहां पर भी ज्यादा स्लोप मिलता है उसी डायरेक्शन में ऑलवेज फ्लो होता है। तो वाटर विच आर इन द डायनेमिक कंडीशन, तो डायनेमिक कंडीशन फाइंड करने के लिए ज्यादातर हम हाइड्रोडायनेमिक मॉडल को यूज करते हैं। और जब भी हम हाइड्रोडायनेमिक मॉडल को यूज करते हैं हमें उसको बेसिक सोर्स फाइल्स देनी पड़ती है। सोर्स फाइल एज हम डीएम को यूज करते हैं। So finally, these are the process. The model are simulated, and finally, it will give you the part of the flood inundations. Now, this is the case. You exactly see the part of Dhanera here. और यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई सैटेलाइट इमेज हमने यूज की हो और एट द सेम टाइम अगर हम हाई रिजोल्यूशन इमेज यूज करें, यानी कि ड्रोन से जनरेट की गई, तो आप यहाँ पर क्लियरली सिग्निफाई कर पा रहे हो कैसे सोसाइटीज और इंडिविजुअल हाउसेस फ्लड में अफेक्टेड हुए हैं। तो रिसेंट जैसे साइक्लोन आया है, बहुत जगह पर बारिश हो रही है,
बारिश के कारण फ्लड आने के चांसेस है, वाटर लॉगिंग के चांसेस है, तो वहां पर क्विकली डिसीजन मेकर को क्वांटिफाई करना हो कि किस सोसाइटी में, किस हाउस में कितना पानी हो सकता है या जाएगा, तो वहां वो सिमुलेट कर पाएंगे ये ड्रोन टेक्निक्स है. These are the examples. Later it has extended in part of we say that the maps. यहाँ पर रिमोट सेंसिंग, GIS और ड्रोन तीनों टेक्निक्स को कंबाइन करके एक मैप बनाया हुआ है. मैप की लीजेंड के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि सिटी एरिया में कैसे फ्लडिंग हो रहा है. So this is the one case where we use drone. Now I will move very quickly. The second case, these are little part of the research and analysis. Who building their career in the part of research. Actually, again, I say that drone play very important role. So recently, one project has been sanctioned from DST, and where we have the objective to identify the parametrical uncertainty by using the high resolution DMs. So we have generated another high resolution DMs just behind to the PDU campus and the corridor of the GIP city. So these are the entire stretch where you see the PDU are situated here, GIP city are somewhere here. So this stretch again where our objective is to know that how the different river cross sections are behave under the different water conditions. In addition, it has also taken the application. यहाँ पर application ली गई है कि river के cross section को identify करके संत सरोवर करके यहाँ पर एक छोटा सा weir बनाया हुआ है. These weir are used for water storing applications. Another important part in every hydrodynamic modeling, क्योंकि जैसे ही मैंने जैसे बताया कि वाटर डायनेमिक कंडीशन में होता है, वो डायनेमिकली फ्लो होता है, तो फ्लो जब हो तब हम उसकी वेलोसिटी को काउंट करते हैं. वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. जैसे हमने ये साइक्लोन में भी देखा कि साइक्लोन की वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से विंड फ्लो होगा. जितनी ज्यादा वेलोसिटी इतना ज्यादा डिजास्टर और वल्नरेबिलिटीज. तो वो वेलोसिटी डिपेंड करती है आपके रिवर की रफनेस के ऊपर, और रफनेस डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ द पेबल्स आर प्रेजेंट इन द बेड ऑफ द रिवर्स. ये पेबल को भी हम ड्रोन से मैप करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लेवल के ये पेबल्स है, उसकी साइज क्या है, और उससे हम एक कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं कि इसकी साइज 0.035 है, तो रफनेस की वैल्यू होगी 0.035. तो ये मॉडलिंग पैरामीटर्स हैं. ये मॉडलिंग पैरामीटर्स को हम इंसर्ट करते हैं हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग में, जिसके कारण मॉडल को रियल लाइफ उसको पता चले कि कैसे रिवर बिहेव कर रही है, and accordingly the water flow in the river section. So these are the another case study, I would say that, where we use the drone for water resources management. Another third important case study is emergency action plan. As I said that, हमारे पास 5,400 डैम्स हैं. जब भी डैम में से पानी हम रिलीज करते हैं, डाउनस्ट्रीम में खतरा रहता है कि कैसे वो फ्लड से अफेक्टेड हो. तो उसके कारण हम कहीं ब्रिजेस पर और लोकेशन पर हम फ्लड इनंडेशन को मेजर करते हैं. तो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के ऊपर अलग अलग हाई फ्लड लेवल को मार्किंग करना है. तो उस टाइम पे जब हम डैम की EAP इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते हैं, तो उस समय पर भी हम ड्रोन को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर इस केस स्टडी में ड्रोन को यूज किया गया है. कुछ हाई पैचेस है जहां पर हाई फ्लड की प्रोबेबिलिटी थी, उस पैचेस में हाई रिजोल्यूशन डीएम को बना के फिर उसको हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग में इनपुट करके सिमुलेट करके इनंडेशंस को फाइंड किया गया है. सो दीज आर द पैचेस एंड दिस इज द केस स्टडी एक्चुअली लोकेटेड इन गुजरात, दमनगंगा डैम. एंड यूजुअली व्हेन द वाटर रिलीज फ्रॉम द दमनगंगा डैम, डाउनस्ट्रीम साइड में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, दमन का एरिया है, वहां पर ज्यादातर फ्लड पाई जाती थी. तो उस फ्लड को एसेस करने के लिए ड्रोन को यूज करके अगेन हाई रिजोल्यूशन डीएम बना के सिमुलेट करके उसमें फ्लडिंग के स्टेजेस को फाइंड किया गया. सो दीज आर द एग्जांपल, द डिफरेंट हाई रिजोल्यूशन फ्लडिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर. कभी भी डैम में से पानी को वो लोग रिलीज करेंगे, वो देखेंगे कि डाउनस्ट्रीम साइड में कैसे डिफरेंट एरियाज फ्लडिंग में जा रहे हैं. उसके बेस पे वो लोग उसकी फॉरकास्टिंग और आइदर अर्ली वार्निंग सिस्टम वो दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट दे विल स्टार्ट टू इवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम द मूविंग एरिया. सिमिलर केस अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है कि अगर डैम में से पानी को रिलीज किया गया है,
तो हमारी इंडस्ट्री तक पानी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और स्पेशली मेरी इंडस्ट्री में किस लेवल पर और कहाँ तक पानी आएगा, तो उसके बेस पे वो पूरा प्लानिंग कर सकता है कि जो भी मटेरियल्स, आइदर इट विल बी इन द शेड और लाइक हाउ दैट इट कैन बी move from one end so that it can be reduce the vulnerability or hazards in the industrial areas. These are the examples, and the another example I will go quick. These are the bridge. We have also mapped the bridge by using the drone. We have converted into 3D, and based on our simulation result, we have marked the water level or indication level at the bridges. So from bridges also we identified that how the water are residing in the study area. I go quickly to the third case study, very small case study, where we have the application to estimate the volume of water in one small pond. So before the monsoon, we have carried out the study of one small monsoon, although it is carried out by one of my students. He has carried out and he has developed the high resolution DM. Later when the water are precipitated, जब भी यहाँ पर रेनफॉल हुई, ज्यादा बारिश आई, उसके कारण ये पॉन्ड जब वाटर से रिसाइड हो गया, तो उसी टाइम पे दोनों के डिफरेंस को देख के वी हैव क्वांटिफाइड दैट व्हाट एग्जैक्टली द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच आर स्टोर्ड इन दिस पॉन्ड. तो हमें पता है कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम तहत गुजरात में ऐसे तो लाखों छोटे बड़े पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए गए. तो अब इस पॉन्ड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अगर हमें कैलकुलेट करना हो, तो ड्रॉन आर वी से some point of time when water are not present into the pond, तो उस टाइम पे अगर आप ड्रोन फ्लाई करवा के उसकी इमेजेस ले लेते हैं, उससे हाई रिजोल्यूशन डीएम बना देते हैं, उसके बाद जब मॉनसून में पानी आता है, दोनों के डिफरेंस को अगर आप फाइंड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉन्ड में अभी कितना वाटर स्टोरेज हुआ. इन एडिशन ऑल्सो यू कैन फॉरकास्ट. कई बार हम सुनते हैं कि कोई पॉन्ड में ज्यादा पानी रिसाइड हो जाए तो उसके बाद वो पॉन्ड स्पिल भी होता है, और जैसे ही स्पिल होगा कोई नियर बाय विलेज और कोई फार्म्स हो गए वो फ्लड से अफेक्टेड हो गए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एक मॉडल सिमुलेट करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई छोटा विलेज हो, कोई छोटी इंडस्ट्री हो, या कोई एग्रीकल्चर फार्म हो, तो वहां पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन दैट वे अगेन दैट आई से ड्रोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. I go through another case study. ये केस स्टडी है एक छोटे से फार्म के लिए, जहां पर फ्लड असेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और वहां पर बताया गया था कि यहाँ एक सोलर फार्म बनाया जाए, सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाए. बट सोलर पैनल को कहाँ पर इंस्टॉल करें, और आइदर देयर हैज एनी केसेस और एनी चांसेस हैविंग द फ्लड्स. अगर आपने कोई भी सोलर पैनल देखी हो, तो उसके जो भी कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम्स पे हम ज्यादातर छोटे कंक्रीटिंग ट्यूब करके उसको इंस्टॉल करते हैं. अब फार्म में अगर सोलर पैनल को इंस्टॉल करनी हो, तो कॉलम जहां पर रिसाइड होते हैं वहां पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई फ्लडिंग की या वाटर लॉगिंग की संभावना है कि नहीं है. तो संभावना फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन डीएम को यूज किया है, और वो हाई रिजोल्यूशन डीएम से अगेन हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग से हमने इनंडेशन फाइंड कर लिया, और उस इनंडेशन से हमें पता चला कि किस एरिया में लो पॉसिबिलिटीज है, किस एरिया में हाई पॉसिबिलिटीज है. तो जहां पर लो पॉसिबिलिटीज है वहां पर हम शायद जो कंक्रीटिंग हम करते हैं वो कॉलम के लिए तो लो प्रोफाइल पे रख सकते हैं, बट जहां पर हाई प्रोबेबिलिटीज है वहां पर उसकी प्लिंथ लेवल को ज्यादातर राइज किया जाता है. तो उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए वी से दैट वी यूज ड्रोन और ड्रोन टेक्निक्स वेयर वी हैव जनरेटेड द हाई रिजोल्यूशन डीएम्स. उसके साथ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स को यूज किया है, लाइक यहाँ पर गूगल अर्थ की इमेज को यूज किया है, और उसके साथ हमने जीआईएस और मे बी QGIS, ओपन सोर्स जीआईएस नाउ इट इज फ्रीली अवेलेबल, तो उसको भी आप कंबाइनली यूज करके इस तरह से डिसीजन मेकिंग मैप्स बना सकते हैं, और इस मैप से आपको पता चल सकता है कि कहाँ पर पानी की रिसाइडिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है. तो उस एरिया में ज्यादातर हम लोकेट नहीं करते, बाकी का एरिया अच्छा है, तो उस एरिया में हम प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल को लगाया जा सकता है. Another one, the last case study I will covered in this lecture, and these are recently we have taken
the application. We invented, we say that the new applications of the drone, where in Gujarat, actually we had under the Sardar Patel Water Conservation Program in Saurashtra regions, till date we have constructed more than 150,000 check dams. Now, though check dams are constructed near about 7 to 10 years before, but because of the uncertain monsoons and these are kind of the cyclones, we have experienced many floods sometime. So the floods are like broken the banks or the embankment part of the check dam. तो चेक डैम को रिपेयर करने की जरूरत होती है कि जिससे कितना पानी अब स्टोर होगा और एफिशिएंटली चेक डैम कैसे बिहेव करेगा। तो उसके लिए भी हमने ड्रोन टेक्निक्स को यूज करके ड्रोन से उस एरिया को कैप्चर करके उसका 3D मॉडल बना के उसके बाद उस चेक डैम की लेंथ, विड्थ, एरिया एज वेल एज जिस पोजीशन पे और जिस लोकेशन पे ज्यादातर वो डैमेजेस हुए हैं उस पार्ट को फर्दर विजुअलाइज करके आइडेंटिफाई कर लिया कि इस चेक डैम में इतना ही पोर्शन ज्यादातर टूटा हुआ है, उसका इधर अपार्टमेंट टूटा हुआ है या मेन पार्ट टूटा हुआ है या फिर अपस्ट्रीम में ब्रेकेज है या डाउनस्ट्रीम में ब्रेकेज है। तो दैट पार्ट वी हैव डिटेक्टेड इट यूजिंग द ड्रोन टेक्निक्स। तो ड्रोन से हमें पता चल गया कि कहाँ पर वो पार्ट मेजर डैमेज है और उस डैमेज को फिर फर्दर कन्वे करते हुए कहाँ पर और किस चेक डैम में कितना खर्चा आएगा या एस्टिमेट लगेगा उसको रिपेयर करने में, तो वो भी हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया। सो अगेन आई से दैट ड्रोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर water resources management. So these are all the examples of where we have identified where length, width, area, catchment area, and in addition we also identified some part of like weeds जहाँ पर ग्रास, छोटे छोटे ग्रास वहां पर ग्रो हो जाते हैं, उसके कारण चेक डैम की स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको भी कई बार रिमूव करना पड़ता है। तो अगेन द ड्रोन आर वेरी एप्लीकेबल टूल टू आइडेंटिफाई दैट कितने एरिया में ग्रास उगी हुई है और उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसका एस्टिमेट क्या हो सकता है, उसका खर्चा क्या आएगा उसको रिमूव करने में। So these are collectively, I say that these all are the 5 very important, I say the application of drones where it will use for water resources planning and management. So I come to the conclusion, end of this session, where I say that yes, definitely the drone is very applicable tool which help you to generate the high resolutions DEM, DSM, and it is applicable for flood assessment. Furthermore, it is applicable for, we say that फ्लड resilience प्लानिंग और फ्लड मिटिगेशन प्लानिंग। जैसे मैंने फर्स्ट केस स्टडी बताया आपको कि धनेरा में फ्लड आई थी, उसके बाद हमने ये वर्क उनको यानी कि डिसीजन मेकर को कन्वे किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट को एंड द आरएनबी डिपार्टमेंट। सो नाउ दे कम टू नो एक्चुअली दैट कैसे एग्जैक्टली वाटर स्पिल होके सिटी में इनंडेट होता है। तो उसके प्रोटेक्शन के बेस में दे हैव डिसाइडेड लेट वी कंस्ट्रक्ट द लेवीज। तो लेवीज को कहाँ कैसे किस लेवल पे कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो उसके लिए भी अगेन द ड्रोन इज वेरी यूजफुल, वेरी एप्लीकेबल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द एरिया। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस ड्रोन, these are very cost effective, cost associated. I say it is a small type of drone and we have used the RGB camera, and RGB camera has converted the image in DEM and DSM. Although LIDAR camera भी available है, but it is very costly actually. पूरा अहमदाबाद से लेके बॉम्बे जो हाई स्पीड कॉरिडोर ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है बुलेट ट्रेन के लिए, तो उसमें लीडर कैमरा को यूज किया गया है और पूरे कॉरिडोर में हाई रिजोल्यूशन डीएम अर्थ सरफेस को जनरेट करके उन लोगों ने उसका अलाइनमेंट फिक्स किया है। बट दो आर कॉस्टली, सो इन रिप्लेसमेंट ऑफ सम टाइम सम प्लेसेस आई से दैट drone is very important techniques which is cost effective techniques which help you to generate the high resolution DM. Few more also we say that all water resources structures जैसे चेक डैम है, अर्दन डैम है, आर्च डैम है, वियर है, बैरेजेस है, उस सभी को कुछ अंतर पर असेसमेंट करने की जरूरत होती है। तो असेसमेंट ऐसे ही हम टैप और लाइक चेन और लाइक थियोडोलाइट लेके जाके हम उसको मैप नहीं कर सकते। उस पोजीशन में ड्रोन आर वेरी यूजफुल टूल टू एसेस दिस स्ट्रक्चर कि ये स्ट्रक्चर अब किस कंडीशन में है और उसको रिपेयर करने की जरूरत है
और नहीं है. So that will be decided based on the very important applications of the drone. Also, drone is useful for acquiring or acquainting the cross sections of the river, and those cross sections are purely useful for construction of bridge across the river, weir, barrage, check dam, and siphon across the river. Last one more application we have derived actually by help of those all case studies, and this is very important part is emergency action plan. So we can also prepare very robust, very efficient, or we say cost efficient emergency action plan for our dams, which is used for decision making system. Again, we say that we can use by help of the drone techniques. So this is all about the drone techniques, and these are the acknowledgement. We are acknowledged to Nabda Water Resources, Water Supply and Culture Department, who wholehearted support us to execute the work. We also thankful to SEC ISRO. We have a couple of the project with us, which are supported by the SEC ISRO, where our PhD students or research scholar working along with the BTech and MTech students working in PDU on this live project, where how drone and the satellites and remote sensing techniques are used in water resources planning and management. These are some of references. If any would like to extract more about that, how exactly and how the different techniques are fusion and how the drone along with remote sensing and GIS are used in flood management, or like we say water resources planning and management, I would recommend you can refer these papers or literature where you aware that how deeply the techniques are used for water resources management. Furthermore, I would say we have also started our own startup, Flood Lab. We have registered recently. We have developed 3 tools for the dams, and gradually we are going like assessing to our dams. And I wish we welcome you participants who are interested further building their career. We will welcome you. Furthermore, as I say, I am also associated with the academic institute, and our role is frequently we are educating the students and the academic field. So in the part of educations, we are going to host one program in PDU, Drone for Civil Engineering Mapping and Modeling Applications. So further where you will learn, you will hands-on also that how drone will use, fly and capture the information, how the data are analyzed, and how the data useful for converting the meaningful informations. We also publish and we have conveyed at the different places the useful application of drone along with the flood and flood modeling. And the very important message come out from this session, this lecture, and I'm sure that you all intelligent people will understand that why we require to upgrade and why we require to use the modern techniques, right? So earlier in maybe in 10 or 13 years before, like we use like plane, helicopter and the camera, like the entire techniques are replaced by using the drone techniques. So we say in just 13 years, the cameraman and pilot lost their jobs. Upgrade yourself. So thank you so much. This is all from my side. I'm sure you cultivate very important informations and the applications from the drone and hydrodynamic modeling or techniques, and I'm very sure it will help you if you take any future initiative in this area. I'm very sure that it will help you to make robust in this area. So thank you so much, Chintan and Ruhi. Thank you, sir. Over to you. If any question, I feel I hope I have completed my session in time. I'm more happy to interact with the student or maybe the participants who are more interested to interact in this area. So we will fuse a few more applications in the area of drone and water resources engineering. Yes, over to you. थैंक यू सर, रूही. या रूही, आपने आपका टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया फर्दर चीजों के लिए. आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू आस्क सर, वो आपको सब क्वेश्चंस बता देंगे. तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली माइक ऑन करके उनसे पूछ सकते हैं. यस.
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या इधर यू आस्क मी डायरेक्टली. Okay, I will write my email. If any of have question later, you can write me without any hesitation. And as I said that we also hosting one program, we would like to invite Dronelab too. Sure, sir. They will contribute and enlighten more about the drone techniques. But today it has given me the specific topic on water resources, so I have enlightened the application of drone in water resources only. Maybe many more application would be possible in future because this is the emerging technique. सभी लोग अभी ही जान रहे हैं कि ड्रोन को कैसे यूज किया जाए और आगे और भी इसकी एप्लीकेशन निकल के आ सकती है. बहुत ही स्कोप है उस एरिया में वर्क करने के लिए. And I'm sure students or entrepreneur or maybe the individual owner or company owner, I'm sure it will help them. And we are always open. We are very happy to do the collaborations in all the segments. So we are welcome you in PDU, in Flood Lab. So anytime you will come and interact with us. थैंक यू वेरी मच सर. आज के ये सेशन में आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए. I hope all the students and participants are learn something different and new in drone field. So मैं आप सभी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए. और थैंक यू वेरी मच सर. Thank you very much for this beautiful and good session. Thank you so much for inviting me. And definitely we have the long-term associations. Periodically we'll organize this kind of sessions and the participant will get benefited from it. Okay, participant, thank you so much. No problem. If you have still any questions, ask me or either we connect via like my email ID. And as I said, we are organizing the similar line, the program in PDU 18th and 20th July. You're most welcome. We explore further about the drone techniques together. Thank you all of you. Thank you sir. Thank you. All the students मैं आपको मैं अब से आगे का वैलिडिटी सेशन में रूही को हैंड ओवर करना चाहूंगा. रूही प्लीज. आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके. और हम लोग लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में एंड चैट बॉक्स में. तो आप प्लीज जाके उसको जरूर रजिस्टर कर लेना जिसने नहीं किया अभी तक. और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है वो एवरी सैटरडे हम लोग 11 AM पे मिलते हैं. तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए भी रेडी है ना. नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन एग्रीकल्चर जो आपको आगे देखने को मिलेगा. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. थैंक यू.